Hello friends, welcome back to another video. In this video, I will be providing you the solution of our data without the degree arcade challenge, defeating the SQL series third lab, that is data stream Postgres SQL replication to BigQuery. Okay, before starting the solution, I simply want to inform you that I already uploaded the solution of the previous 7 labs. जो भी previous 7 labs हैं सबका solution मैंने अपने channel पे upload कर दिया है और ये big leg quick start है इसका भी कर दिया है. ठीक है, तो that you can access by simply clicking on the I button on the top right corner. जैसे आप I button पे click करेंगे आपको previous सारी lab का solution मिल जाएगा, तो कोई भी बच्चे तो जाके complete कर ले. Okay, now without wasting time, start this lab. Wait for the page to be loaded up. Once the page gets loaded, click on the Start Lab button and wait for the credentials. Now simply click on the Open Google Console, open it in private window, right click on Open in Google Console and open it in incognito mode. Otherwise, you will face certain issues. Okay. Now you know email ID will be automatically pasted up. Click on the next button. We need the password. हमें सिर्फ password चाहिए होता है. Email ID paste होके आती है. Okay. So copy this password very carefully. Now come back to here, paste the password here. Click on the next button and wait for it to get logged in. First of all, click on the I understand button. It's simply a welcome message. After that, we need to accept some terms and conditions. Simply click on this checkbox and click on agree and continue. Now we need to activate a cloud share. मैं activate करना हो cloud share, उसके लिए इस पे click करेंगे. Top right icon, activate cloud share, open it. Wait for it to establish our connection. While it's establishing the connection, come back to here. Scroll down to task 1. Task 1 पे आएंगे. Okay, copy this first command. Come back to here. Click on this continue button. Wait for it to get established. Now simply click on this got it button and now paste the command that we copied. ये हमारा terminal ready हो चुका है. हम यहाँ पर command paste करेंगे. Hit the enter button. Click on the authorize button and wait for this command to get run. This command will take around seconds. So simply come back to here, scroll down, copy the next command, come back to here, paste it here, hit enter button. Now this command will take a little bit longer. आपको 4 से 5 मिनट लग जाएंगे इस कमांड में. So in that time, make sure you hit the subscribe button and hit the like button. और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इस लैब में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं. तो बस एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, नहीं तो आप जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो मिस करते रहेंगे. ओके, सो नाउ सिट बैक एंड रिलैक्स एंड वेट फॉर दिस कमांड टू गेट रन. Now you can see our command gets run successfully. After that, come back to the lab, scroll down, click on the check my progress. You will get the green tick in this task. Wait for it. अगर आपको पहली बार में ग्रीन टिक ना मिले, then try to 2 to 3 times, you will definitely get a green tick. पहली बार में कई बार नहीं मिलता. Okay, you can see assessment is completed. Now copy this next command, come back to here, paste it here, hit enter button. It will take around 1 minute to show the next prompt. आपको पासवर्ड के लिए आस्क आएगा, तो पासवर्ड के लिए आपको ये कॉपी करना है. Copy it very carefully and don't copy the full stop at the end. इसको हम पासवर्ड की तरह यूज करेंगे. So wait for this command prompt to show the password option. So wait till then. Now you can see it's asking for the password. So simply paste the password that we copied and make sure आप ध्यान से कॉपी करें, क्योंकि पासवर्ड जो है विजिबल नहीं होगा. मैंने यहाँ पर पासवर्ड पेस्ट कर दिया लेकिन मेरा पासवर्ड विजिबल नहीं हो रहा. इट्स बिकॉज द पासवर्ड इज हिडन और इनविजिबल. ओके, नाउ आफ्टर पेस्टिंग द पासवर्ड कॉन्फिडेंटली, हिट द एंटर बटन and you will logged in into the different prompt that will show as the Postgres. Okay, now simply come back to here, scroll down, copy the next command, come back to here, paste the command here, hit enter button and wait for this command to get run. Now come back to here, scroll down a little bit, copy this command, next command, come back to here, paste it here and hit enter button. After that, we need to come back to here, scroll down and activate our Postgres SQL, so data stream API. So for that, copy this name, data stream, copy करेंगे ध्यान से. Come back to here, under the search bar, type the name that we copied or paste it and open this data stream. Wait for it to get load. Well, yes, wait for it to get load first. Once the page get loaded, click on the enable button to enable this data stream API. And while it's enabling, just maximize this tab or the terminal and scroll up in the terminal. You need to scroll up a little bit and we need to locate this status runnable and we need to copy this from tired to runnable. हमें इसको select करना होगा, पहले हम इसे ध्यान से select करेंगे और इसको हम copy करेंगे. Copy हो चुका है. Okay, now let's minimize it and you will see our API gets enabled. So first of all, again maximize. मैंने एक चीज मिस कर दी. I missed one thing, that is we need to copy this till the name. Name से हमें runnable तक copy करना है. We need to copy it from the name. Okay. So after copying it, open a notepad in your computer. I'm opening a notepad and we need to paste this whole in the notepad. तो हम paste कर लेंगे. ध्यान से कुछ ऐसा दिखना चाहिए. After that, now we can minimize this tab and again click on this search bar and again click on the data stream. After enable API get enabled. API जब enable हो जाएगी, फिर से हमें data stream को open करना होगा. So wait for this page to load. So now here click on the connection profiles and we need to create a Postgres profile. So wait for it. Here click on the create profile button, click on this Postgres SQL, open it, and while it's loading, simply come back to here, scroll down a little bit, keep scrolling and copy this name Postgres SCS or Postgres CP. Copy it very carefully. ध्यान से copy करेंगे, extra full stop या spacing नहीं होनी चाहिए. Now click on this got it button and paste it under the profile name. So now scroll down a little bit. Once you paste the projection ID, project profile name, you will see automatically Postgres CP in the profile ID. Okay, now scroll down. We need the host name or IP. So for that, simply come back to the notepad and copy this address. Copy it very carefully. Don't copy any extra spacing. Come back to here, paste it in the host name or IP. Now we need the username. So simply come back to the left for the username and copy this username carefully. Come back to here, paste it in the here, and we need the password. So password is again PWD. Copy it carefully. ध्यान से copy करेंगे. Come back to the console, paste it under the password, and for the database name, simply come back to here, copy this Postgres, copy it very carefully, come back to the console, paste it under the database name. Now click on the create table and wait for it to get create. Okay.
So while it's creating, come back to the lab, scroll down, keep scrolling. Now we need to copy this BigQuery CP. We need to create a BigQuery profile. Come back to here, wait for it to get create. It will automatically redirect you to the next page. So once the page get loaded, simply click on the connection profiles once again. We need to create a new profile for the our BigQuery. Click on this create profile button, and from here select the BigQuery. So now paste the name that we copied, paste it here. Now simply wait for it to enable the create button. थोड़ा सा wait करेंगे, हमारा create button अपने आप enable हो जाएगा. After that, click on the create button and wait for it to get create. While it's creating, simply come back to the lab, scroll down. Now we need to create a stream. So for the stream name, copy this. We will use this. Copy it very carefully. ध्यान से copy करेंगे, कोई extra spacing नहीं होनी चाहिए. Okay. Now come back to here. Wait for it to get load. Now click on this streams button. This time we need to create a stream. Okay. So wait for this page to load it. So simply click on the create stream button. Once the page get loaded, wait for it to open. Paste the name that we copied. Scroll down a little bit from the source type, select the PostgreSQL, and the destination type will be BigQuery. Okay, now scroll down, keep scrolling. Now click on the continue button, click on the source connection profile, click on the Postgres CP, click on the continue button, and we need the replication slot name. So simply come back to the lab. Here scroll down a little bit, ध्यान से scroll करेंगे, scroll down and copy this name, slot name, copy it very carefully. Don't copy any full stop. Okay, आपको full stop copy नहीं करना है. Now paste it under the slot name. Now once again come back to the lab, copy this name for the publication, copy it very carefully. Again, don't copy any full stop or extra spacing. ध्यान से copy करना है. Come back to here, paste it under here. Keep scrolling and select this test button. Select this text box, or if you don't able to see this test button, then simply type it under the search bar. Okay. Now scroll down, click on the continue button, and wait for it to get saved. Now from the destination connection profile, select the BigQuery CP, click on the continue button. Now from here, select the region as the location type, and for the region, select the US Central one lower. Okay, and scroll down, keep scrolling. From the stateless limit, select 0 second. Let me check the region once. Yes, the region will be US Central one. Okay, now scroll down, click on the continue button. Again, scroll down, click on the create and start. Okay, click on the create and start, and it's started to create our stream. So wait for it. It will take around 5 to 6 minutes. पहले हमें एक नए पेज पे redirect हो जाएगा, वहाँ पर हमें status दिख रहा होगा अपने stream का, and there we will wait for 5 to 6 minutes to get created. आप देख सकते हैं एक नया पेज redirect हो गया है. Here you will see the progress is in running the stage, so we need to wait till it get created. And okay, so till that time, make sure you hit the subscribe button, hit the like button, and if you have any query, you can ask me in the comment box. Okay, so wait for it to get created. So once your stream get created, you will see a message like this: test stream successfully started, and you will see a icon like this, round icon. It means our test stream is now successfully created. Now if you come back to the lab, scroll down and click on the check my progress for this task, you won't get the green tick in the first trial. आपको एक बार में green tick नहीं मिलेगा. ऐसा इसलिए क्योंकि पूरा डाटा सर्वर पे लोड होने में कम से कम इसमें 10 से 15 मिनट लगेंगे. तो आपने अगर पूरी स्टेप सही से फॉलो किया तब भी आपको 10 से 15 मिनट यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, और तभी आपको ग्रीन टिक मिलेगा. तो अभी आप इसको लीव कर दें. कम बैक टू द नेक्स्ट टास्क. कॉपी दिस कमांड ओनली इफ your connection is lost with the terminal. मैं क्या कह रहा हूँ आपको बताता हूँ. Simply maximize the terminal, wait for it to get connected, scroll down to the top bottom most, and here if you don't see the postgres, अगर आपको यहाँ पर postgres ऐसा कुछ नहीं दिख रहा हो, तब आपको वाला कमांड कॉपी करना है और पेस्ट करना है जो मैंने बताया है, that is फर्स्ट वाला कमांड. अगर आपका टर्मिनल मेरे तरह ही दिख रहा है कुछ लाइक दिस, देन सिंपली कम बैक टू द लैब, कॉपी द सेकंड कमांड. फर्स्ट कमांड रन तब नहीं करना है. फर्स्ट कमांड कब रन करना है? जब यहाँ पर postgres की जगह कुछ और लिखा रहा हो और अगर आपका डाटा कनेक्शन लॉस हो गया. ओके, सो नाउ कम बैक टू हियर, कॉपी दिस कमांड, come back to here, paste it here, hit enter button, and wait for this command to get run. So once this command gets run, simply minimize it. Now we need to open the BigQuery. For that, simply type BigQuery in the search bar, remove this and type BigQuery and open it. Wait for it to get open. While it's opening, simply come back to here, scroll down, copy the next command, come back to here. It's still loading. Wait for the BigQuery to be open. Now here click on the done button. After that, click on this arrow. You will see a data structure. Click on this test button. Okay, now here we need to click on this editor button. After that, paste the command that we copied here and click on this run button and wait for this command to generate the result. So now once you get the result like this, simply come back to here. And again, if you click on the check my progress, you won't get the green tick in this task. आपको green tick नहीं मिलेगा. अब आपको इस लैब को कम से कम 20 मिनट के लिए, अराउंड 20 मिनट्स के लिए लीव करना होगा रनिंग केस में. ओके, यू कैन सी माय टाइमर इज अराउंड 37. सो आई विल वेट टिल इट शोज द 17 मिनट्स है. यहाँ पर जब 17 मिनट्स रिमेनिंग हो जाएंगे तब मैं वापस आऊंगा, चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करूंगा दोनों टास्क के लिए, तब मुझे ग्रीन टिक मिल जाना चाहिए. ओके, लेट्स सी, वंस ट्राई अगेन फॉर चेक माय प्रोग्रेस. अगर आपको थर्ड टास्क के लिए चेक माय प्रोग्रेस पे ग्रीन टिक मिलता है या नहीं, देख लेते हैं एक बार. इट्स स्टिल थ्रोइंग द एरर. सो हमें कम से कम अराउंड 20 मिनट्स यहाँ पर वेट करना होगा लैब में, उसके बाद आके फिर से ट्राई करेंगे. ओके, सो टिल देन यू कैन परफॉर्म द अदर टास्क. बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी ये लैब बंद ना हो गलती से भी और आपका कनेक्शन लॉस ना हो. ओके, तो इतनी देर में आप कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं. ओके, सो वेट फॉर इट. सो आई ऑलरेडी पास 10 मिनट्स इन दिस लैब. एक बार हम ट्राई करके देख लेते हैं. सो सिंपली स्क्रॉल अप टू द टास्क 3. इस पर चेक माय प्रोग्रेस पे ग्रीन टिक देखते हैं मिलता है या नहीं. क्लिक ऑन द चेक माय प्रोग्रेस एंड वेट फॉर इट. इट्स स्टिल थ्रोइंग द एरर. इट मीन्स वी नीड टू स्टिल वेट फॉर इट. हमें थोड़ा सा और वेट करना है. हमने सारे स्टेप्स ध्यान से फॉलो किए हैं, बस हमें यहाँ पर वेट करना होगा.
and let's try for this one. Before try for this one, simply come back to the console and rerun this task. हमें फिर से रीरन करना होगा ताकि हमें check my progress 4 task के लिए हम check कर सकें. Okay, so wait for it a little bit for the results to be loaded up. Come back to here, check my progress पे click करेंगे. इस वाले check my progress पे भी click करेंगे. Wait for it. You can see we get the green tick in the task 4. हमें task 4 में तो green tick मिल गया है, बस task 3 बचा है. हम task 3 के लिए वेट करेंगे. अभी 10 मिनट और वेट करते हैं, उसके बाद हम वापस मिलते हैं. ठीक है. So now we already spent sufficient time in this lab. Let's retry for the task number 3. Click on the check my progress and hope it get the green tick this time. Wait for it. So let's see. So it's still exporting the data. तो थोड़ा सा हम वेट और कर लेते हैं. वैसे हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, लेकिन हमारे पास वेट करने के अलावा कोई टाइम नहीं है, ऑप्शन नहीं है, क्योंकि it's saying the stream has started but data hasn't reached by query. Wait until the rows are updated and check the progress again. तो ये खुद कह रहा है कि हमें थोड़ा सा वेट करना होगा. तो एंड तक हमें उस थर्ड टास्क में ग्रीन टिक तो नहीं मिला, शायद और टाइम लेता, लेकिन मेरी लैब अपने आप एंड होने के बाद जब मैंने ये पेज को वापस से लोड किया, आई एम एबल टू सी द ग्रीन टिक बिसाइड आवर लैब. हमने बाकी के तीनों टास्क पे हमें ग्रीन टिक मिल गया था, जो थर्ड पर्टिकुलर टास्क था उस पे हमें ग्रीन टिक नहीं मिल रहा था. वो कह रहा था वेट करना है, बट वो मेरा भी नहीं हो पाया. कुछ टाइम जो है एक्सीड हो गया, मेरी लैब अपने आप एंड हो गई, बट आई गेट द ग्रीन टिक. ओके, सो अगर आपका भी ग्रीन टिक उस लैब में उस पर्टिकुलर टास्क में ना मिले, देन डोंट वरी, आपकी लैब एंड हो जाने दीजिएगा. उसके बाद आप वापस आएंगे, यू विल सी अ ग्रीन टिक बिसाइड आवर लैब. इट मींस दैट पर्टिकुलर टास्क इज नॉट वेरी नेसेसरी. ओके, सो यू कैन skip that task. It means we are done with this. This is the solution of this video. If you like the video, make sure you hit the like button, hit the subscribe button. If you have any query, you can ask me in the comment box or in the Telegram group. Okay, so that's it for this video. Thank you very much. Goodbye.